Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the laws of crystallography. So what is crystallography? It is the branch of science Crystallography is the branch of science that deals with the geometry properties and structure of the crystals. Geometry, properties and structures of the crystals is called crystallography. Crystallography is the branch of science that deals with the geometry, properties and structures of the crystals. So this crystallography is based on three fundamental laws. Crystallography is based on three fundamental laws. Called laws of crystallography. Laws of crystallography. These three laws are the law of constancy, the law of constancy of interfacial angle, constancy of interfacial angles. Second, the law of symmetry. And third, the law of rational indices. Law of rationality of indices. These three laws, these are the fundamental laws of crystallography. So first we discuss the law of constancy of the interfacial angles. The law of constancy of interfacial angles. According to this law states that for a given substance the corresponding faces are planes. It states that for a given substances the corresponding faces are planes forming the the corresponding faces are planes forming the external structure of the crystals. External structure of the crystals. According to this law, the corresponding faces are plane which form the external surface of a crystal always intersect at definite angle. Always intersect at definite angles, and this angle remain constant. And this angle remain constant.
no matter how the crystal has been developed. No matter how the face has been developed. According to law of constancy of the interfacial angle, for a given substance, the corresponding faces or the corresponding planes which form the external structure of a crystal always intersect at definite angle. Number one, and this angle remain constant for a given substance, no matter how the face has been developed. किसी तरीके से भी अगर क्रिस्टल्स को बनाया गया है तो उनके इंटरफेशियल एंगल वो सेम रहेंगे. So it has been observed, that the crystal planes are unequally developed. That plane of crystal planes develop unequally for a given substance. So it produces crystal having faces of variable size and shape. Hence, it produces crystals of variable faces. That is, इनका size और shape different होंगे, size and shape. Variable having variable size and shape. Different size के crystal बन जाते हैं for a given substance. तो size तो different होंगे. In this size and shape depends on number one, cooling of the rate of cooling and experimental condition of the crystal formations. Condition of crystallizations. So, as these conditions may vary, so therefore crystals of different shapes, different sizes can be formed for a given substance. Although the size can be different, however, the interfacial angle will remain the same. So as a result of these two conditions, crystals of different sizes may develop for a substance. However, the angle between faces of the crystals of a particular substance are always the same. However, the angle between faces of the crystals will always remain the same, For example, एक 2 dimensional अगर हम एक ले लेते हैं crystals formation structures, एक हमारे पास ये इस शेप में क्रिस्टल बन गया है 2D, और इसी सब्सटेंस का एक और क्रिस्टल इस साइज में बन जाता है. So same substance having two different crystals of the different sizes due to experimental conditions.
तो इस तरह साइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो इंटरफेशियल एंगल है, फॉर एग्जांपल ये है अल्फा, ये एंगल और ये एंगल, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। द साइजेस, यानी ये अगर हम इसको स्ट्रक्चर ए कहें और ये बी है, तो क्या कह सकते हैं, ए एंड बी रिप्रेजेंट 2D क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस। ए एंड बी दे रिप्रेजेंट 2D क्रिस्टल्स। क्रिस्टल वैसे 3D होते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम 2D ले लेते हैं। 2D crystals of a substance. These crystals have been developed under different conditions, so their size are different. Their sizes are different. However, angle of interfacial angles are same. इस तरह ये एंगल इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है, ये वाला इसके साथ सेम है, एंड ये, तो सारे एंगल्स ये इंटरफेशियल एंगल सेम ही रहेंगे। So this is the law of interfacial, this is the constancy of the interfacial angle, which states that for a given substance, the corresponding faces or planes forming the external structure of a crystal always intersect at definite angle, and this angle remain constant, no matter how the crystal has been developed. This is the law of constancy of the interfacial angle. Second is the law of symmetry. Law of symmetry. According to this law, the crystal of a particular substance always, this states that crystal of a particular substance always possess the same element of symmetry. Always possesses the same element of symmetry. According to law of symmetry for the crystallography, it is stated that the crystal of a particular substance always possesses the same element of symmetry. वो चाहे जिस तरीके से भी बनाया गया हो, उसके सिमेट्री एलिमेंट सेम होंगे। यानी क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसके क्रिस्टल क्यूबिक ही बनेंगे, उसके सिमेट्री एलिमेंट सेम ही रहेंगे। For example, a cubic crystals always possesses 23 different elements of symmetry. Different elements of symmetry. Any symmetry of the crystals will remain the same irrespective of their development. किसी तरीके से भी अगर इसको बनाया गया हो तो जिस तरह इंटरफेशियल एंगल अगर सेम रहेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी सिमेट्री भी सेम रहेंगे। इंटरफेशियल एंगल
और सिमेट्री एलिमेंट्स ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब ये सिमेट्री एलिमेंट्स है क्या? सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, ये पहले आप लोग लास्ट स्टेज पर पढ़ चुके हैं एमएससी में या बीएस के 8th सेमेस्टर में। सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या है ये ऑपरेशन। पहले सिमेट्री ऑपरेशंस क्या है? Symmetry operation is an action of light performed on a crystal such that the configuration of the crystal before operations and after operations are indistinguishable. Operations, this is an actions applied on a crystal such that the configurations of the crystals before operations and after operations are indistinguishable. Indistinguishables. An action applied on a crystal such that the configuration of the crystal before operations and configuration of the crystal after operations, they are indistinguishable. यानी उसमें हम फर्क डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये एक्शन ये कहलाता है सिमेट्री ऑपरेशंस या सिमेट्री एक्शन। यानी क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, दिस एक्शंस कैन बी, ये तो रोटेशन हो सकते हैं कि इसको रोटेट करते हैं, क्रिस्टल को रोटेट करते हैं। तो रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद की कन्फिगुरेशन वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल का अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, इस तरह का क्रिस्टल है, यानी ये अगर हम ले लेते हैं ना, तो इसका ये टॉप व्यू अगर हम ले लें तो ऐसा नजर आएगा ना। अब अगर इसको हम रोटेट करते हैं, ये 1 2 3 और 4, इसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये 1 2 की जगह पर आ जाएगा ना, ये 1 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पर, 3 और 4, इस तरह की कन्फिगुरेशन, ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ये रोटेशन ये एक सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। यानी सिमेट्री ऑपरेशन इज एन एक्शन दैट लीव्स ए क्रिस्टल in indistinguishable configurations. So it can be rotation or it can be reflections. किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये टॉप व्यू किसी क्रिस्टल का ले लेते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? ये 2 3 1 और 2, ऐसा इसका ये 4 है, 3 और ये 4, ये ओरिजिनल है, ये इसका इमेज है। तो रिफ्लेक्शन से इमेज बन जाता है, तो ये इमेज और इसका ओरिजिनल वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो दिस रिफ्लेक्शन इज अ सिमेट्री ऑपरेशन। इसी तरह या इन्वर्जन है, इसको इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 2 3 और 4 किसी सेंटर से इन्वर्ट करते हैं, ये 1 3 की जगह पर 3 1 पर 2 और 4 इन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या बन जाएगा? ये 1 और 3 2 और 4, तो ये अगेन ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है।
तो अगर ऐसा एक ऑपरेशन हम किसी क्रिस्टल पर अप्लाई करते हैं कि इस ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल हो, तो ये एक्शन कहलाता है सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? जब हम रोटेशन की बात करते हैं, सो रोटेशन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड थ्रू एन एक्सिस। It is performed through an axis. अब अगर रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है तो वो जिस एक्सिस से हम रोटेट करते हैं वो हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स। If rotations is symmetry operations, then plane axis of rotations वो हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट। अगर हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, यानी ज़रूरी तो नहीं है कि उसका रोटेशन के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल बन जाए, लेकिन अगर बन जाते हैं तो फिर वो सिमेट्री ऑपरेशन है। अगर रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है तो एज रोटेशन इज ऑलवेज परफॉर्म थ्रू एन एक्सिस, रोटेशन इज रिलेटेड टू एन एक्सिस। सो इफ रोटेशन इज सिमेट्री ऑपरेशन, then the corresponding axis of rotation will be called a symmetry element. इसी तरह reflection है। If reflection is symmetry operations, then जिस plane से reflection is associated with a plane, this is associated with a plane, reflection is always performed through a plane. So if reflection is a symmetry operation, then the corresponding plane, जिस plane से हम reflect कर रहे हैं, corresponding plane is symmetry element. अब हर रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है भी नहीं। फॉर एग्जांपल, एक क्रिस्टल का टॉप अगर इस तरह है, अब अगर इसको इस प्लेन से हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये रिफ्लेक्शन, ये इसका प्लेन है ना, तो ये रिफ्लेक्शंस, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। अगर यहां से कर लेते हैं, यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो ये प्लेन, दिस इज अ सिमेट्री एलिमेंट, क्योंकि इस प्लेन से जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन, वो सिमेट्री ऑपरेशन है। तो अब इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो सिमेट्री एलिमेंट हो गया। So reflection is always performed through a plane. If reflection is a symmetry operation, then the corresponding plane will be symmetry element. इसी तरह जब हम inversion की बात करते हैं, so inversion is performed through a single point. अब अगर इन्वर्जन एक प्रोसेस है, एक एक्शन है, अगर ये सिमेट्री ऑपरेशन है तो फिर वो सिंगल पॉइंट जहां से इन्वर्ट करते हैं, जो सिंगल पॉइंट है वो हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट। तो किसी भी क्रिस्टल में सिमेट्री एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। अब ये सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन, ये 5 टाइप्स के हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। These are n-fold axis. There are 5 types of symmetry elements and symmetry operations which
have to be observed in the crystals in order to observe the symmetry of the crystals. Types of symmetry elements or operations. 5 types. क्रिस्टल्स में 3 टाइप हम डिस्कस कर लेंगे, इन टोटल 5 टाइप्स हैं. एक है इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस, एक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन, another word center of inversions, or proper rotation improper rotation axis. इसको प्रॉपर रोटेशन एक्सिस भी कहते हैं. प्रॉपर रोटेशन एक्सिस और इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस. And 5th is identity. These are 5 types of symmetry elements and symmetry operations. ये डिटेल से आप लोग MSc के फाइनल सेमेस्टर में या BS के फाइनल सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. इसमें क्रिस्टल के साथ रिलेट हम ये 3 डिस्कस कर लेते हैं. What is इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स. Again, according to law of symmetry, all these symmetry elements and symmetry operations in the crystals of a given substance will remain the same. यानी symmetry same रहनी है. तो इसका मतलब जब इंटरफेशियल एंगल सेम रहेंगे तो symmetry भी सेम हो जाएगी.